good afternoon, students. So, what we were doing in the last class. So, we have started the new chapter, which was mathematical expectation. Okay, beta. So, expectation was nothing but mean for a random variable, right? Mean value for a random variable. So, we have defined given x a random variable with PDF f of x, then expected value of x was, can you tell me what was expected value of x? This was sum of x f of x for all values of x in case x is discrete, and it was integral x f of x dx when x was continuous. Okay beta, so this is what we have done yesterday. And we have also seen that if you have a random variable x and then you have fx as the PDF and then you have another function of a random variable. Okay, so you have a random variable capital X, capital Y is another random variable which is obtained from capital X as g of x. Then expected value of your random variable y, that is expected value of g of x, is equal to क्या था formula, summation g of x f of x over all values of x or integral g of x f of x dx. So the idea here was that the PDF will remain same, the values will change. So this is the summary of what we had done in the last class. So now we'll continue from here. So the next thing is, so suppose you have a situation when we have two random variables instead of one random variable. We have x and y, two random variables. अगर दो है तो instead of PDF what we will have, joint PDF, right? With joint PDF, बेटा ये टर्म सबको क्लियर है ना? joint PDF क्या होता है? What is joint PDF? Which tells you the probability of x is equal to capital X is equal to small x and capital Y is equal to small y. अब आपके पास दो random variables हैं x and y and you know their joint PDF. Then for any function of x and y, right, what will be the expected value beta? That will be sum of the values times the corresponding probability. Does that make sense? हर वैल्यू को corresponding probability से मल्टीप्लाई कर दोगे and then you will add over all the values of x and y. That will give you the expected value of gxy, or you will integrate if it is a continuous random variable. Fine beta? I'm sorry? नहीं, ये actually this is a random variable containing both x and y. h of y तब आएगा if you have only y, है ना? h of y is the marginal PDF of y. वो सिर्फ y की probability बता रहा है. And then here this is a random variable which involves both x and y. For example, suppose I am looking for, if I am looking for what is the expected value of x plus y, तो कैसे आएगा वो कि x plus y की डिफरेंट वैल्यूज टाइम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग PDF, ऐसे आएगा ना बेटा, राइट? एंड सपोज आई एम लुकिंग फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल व्हिच इज x स्क्वायर y, तो वो क्या होगा कि x स्क्वायर y की ऑल पॉसिबल वैल्यूज इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Because fxy here is your joint PDF. तो वो क्या बताता है कि for x is equal to this and y is equal to this, what is the corresponding probability? And जो आपका g capital X comma y है, that is a function of capital X and y. Do you get it? समझ में आ रहा है बेटा क्या हो रहा है? कि आपके पास दो random variable है x and y, ठीक है? And they are related and we
have their joint PDF. I am interested in what is the mean of x plus y से, right? तो मीन कैसे निकलेगा? x plus y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो कहां से आएंगी? x और y की वैल्यूज से टाइम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, ऐसे तो निकलेगा मीन, एंड देन ऐड ऑल द टर्म्स. मीन कैसे निकलता है? वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस अनदर वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी. ये तो पता है ना? नाउ यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू नहीं है, दो है, x एंड y, और उसका पीडीएफ कैसे है? fxy. ओके, सो लेट अस डू वन प्रॉब्लम. और इसमें अगर ओके, एंड इफ x एंड y are two random variables with joint PDF fxy, then what will be the expectation of only x? x की एक्सपेक्टेशन क्या होगी बेटा? That will be summation over x and y. अब यहाँ पे g नहीं है, सिर्फ x है, तो x fxy होगा, right? Okay, now what is this thing? Can you tell me what is this quantity here? Summation over y of fxy. This is h of y. This is marginal, sorry, g of x. g of x है ना? आपने y के ऊपर सम कर दिया, it will be a function of x only. So this is marginal PDF of x. So that means the expected value of x can be computed as x into the marginal PDF. That makes sense, right? मतलब अगर आपके पास एक situation है where you have two random variables x and y, you can either use this formula using the joint PDF or you can use the marginal PDF to compute the expected value. Is this clear now? This is what you were asking, right? You will use marginal when this gxy is a function of only x or only y, but वो भी आपकी choice है, आप ये वाला formula you can use all this. Okay, ये वाला बेटा समझ में आ रहा है? एनीबडी जिसको नहीं समझ में आ रहा है? डन. So similarly, what will be expected value of y in this scenario? That will be summation x, summation y, y fxy, या फिर what is this? What is this quantity beta? This is h of y, right? If you sum the joint PDF over all the values of x, that is marginal PDF of y. So this is marginal PDF of y. Therefore, you can compute it as y into h of y. Right? That makes sense. क्योंकि सिर्फ y की बात कर रहे हैं तो उसका PDF कौन होगा? मार्जिनल PDF. और सिर्फ x की बात कर रहे हैं तो उसका PDF which is marginal PDF of x which is g of x. और अगर दोनों की बात कर रहे हैं simultaneously, then you have to use joint PDF. Okay? Clear है? Let us do one problem. तो आपको समझ में आएगा. So you have x and y are two random variables with the following joint PDF. वैल्यूज हैं 0, 1, 2 x की, एंड y की जो वैल्यूज हैं दे आर अगेन 0, 1, 2. And this is my fxy which is joint PDF. So this is 3 by 28, 9 by 28, 15 by 28, and then you have 3 by 14, 1 by 28, 3 by 14, 0, 0, 0. And your question is find expected value of xy, find expected value of x plus y, find expected value of x. Okay, so you have this situation where you have two random variables x
x and y and the corresponding PDF is like this, we have to find, do you agree that x into y will be another random variable, right? If x and y are two random variables, x into y will be a random variable too, right? And similarly x plus y will be a random variable. So हमने सबका मीन निकाला. तो बताइए बेटा, what will be expected value of xy? That will be by the formula sum over all the values of x, sum over all the values of y, xy क्योंकि ये xy है into fxy. इस स्टेप में किसी को डाउट? ये क्लियर है सबको? ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y. x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 से स्टार्ट होगा, so x can be 0 and correspondingly y can be 0, f0 0, then 0 y can be 1, f0 1, plus 0 y can be 2, f0 2, then x can be 1, y can be 0, f1 0, plus x can be 1 into y can be 1, f1 1, plus x can be 1, y can be 2, f1 2, and then you have x can be 2, y can be 0, f2 0, plus x can be 2, y can be 1, f2 1, plus x can be 2 and y can be 2, f2 2. Is this thing clear beta? This is what we are looking for, that xy की all possible values कितनी होगी? वो 3x की वैल्यूज है, 3y की वैल्यूज है, तो xy की टोटल वैल्यूज कितनी होगी? 9, राइट? 3 into 3, all possible combinations of x and y will give you a product xy, right? Does that make sense beta? तो ये टर्म्स आप चाहे ना लिखना, so there is only one non-zero term, right? This one. Everything else is zero. ये zero है, ये zero है, right? So your answer is 3 by 40. Because f11 क्या है? ये रहा f11. Everything else is zero. So what is the expected value of the random variable xy? 3 by 40. किसी को डाउट तो बताइए. Similarly, can you do the second part? X plus y लिखना है xy की जगह पे. Then you have so many terms which are non-zero. जैसे ये non-zero हो जाएगा, ये non-zero हो जाएगा, right? You can compute. Is that okay? On the same lines. Now let us go for this. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये बता दीजिए. Then we can go for expectation of x. एक्सपेक्टेशन ऑफ x के लिए क्या करो बेटा? मार्जिनल पीडीएफ कैसे बनाते हैं? Tell me. You add these rows and columns. You know, right? We have gx here and hy here. You add the this row, you'll get 15 by 28 here. Add this row, you'll get 3 by 7 here and 1 by 28. Similarly, you add this column, you'll get 5 by 40. Here is this is 15 by 28 and here it is 3 by 28. Okay? ये हम बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? सो नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विल बी, x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 इनटू व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी? 5 by 14 प्लस x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 15 by 28 प्लस x की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी व्हिच इज 3 by 20. क्या कह रहे हैं बेटा? कुछ गलत लिखा है मैंने? This one? This one? Yeah, sorry. मैंने ये शायद यहाँ ही गलत लिख दिया बेटा. ये 3 by 28 है. ओके, आई एम सॉरी. तो यहाँ पे भी आपका, अच्छा नीचे में ये 3 by 28 है. ओके, मैंने ये वाली टर्म ली. 3 by 28 नीचे आएगा. ओके, दैट इज ओके. So you see how we compute the expected value of x. आप वैसे ऐसे भी कर सकते हो.
ज्वाइन पीडीएफ यूज करके भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकल जाएगी, राइट? चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दैट इज योर चॉइस। इट डिपेंड्स ऑन, अगर सिर्फ मुझे मार्जिनल पीडीएफ पता है तो ऑब्वियसली आई यूज दिस फॉर्मूला, एंड इफ आई नो ओनली द ज्वाइन पीडीएफ आई कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूलाज। पहले ज्वाइन से मार्जिनल निकाल लो फिर ऐसे। कोई डाउट है बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, मतलब आपको क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं? X is a random variable that will generate a data set और उस data set का मीन निकाल रहे हैं। Have you done the lab experiment? Third and fourth? Correct? Lab में कर लिया बेटा third and fourth? So when you do these things in lab, you'll understand what exactly we are doing, right? चलिए आगे बेटा। Any doubts? So next thing is, okay, I'll just give you a homework problem. So you have x and y are two random variables with joint PDF. ये continuous है, okay? Continuous random variables with joint PDF fxy is equal to x into 1 plus 3y square upon 4 for 0 less than x less than 2 and 0 less than y less than 1, 0 otherwise. Find expected value of y over x. Okay? And the answer is 3 by 8. कर लेना इसे. Fine. So what will be the formula? Simple. Integral over x and y of y upon x fxy dx dy. Right? यही है ना? ये हमारा g of x comma y हो गया. So g of x comma y into the PDF, joint PDF in this case, into you have to integrate it over x and y. So your answer will be 3 by 8. So for these two random variables with this joint PDF, y upon x is another random variable whose mean is 3 by 8. Okay, so you can do it. Done? चलिए आगे. Okay beta, so what we have done now, that you had x there and PDF, then we define mean which was your expected value. I told you it in the last class also. So ये PDF, ये क्या था? मॉडलिंग. ये हमारा एनालिसिस पार्ट है. बेसिकली वी आर trying to see what we can associate with our random variable. So except mean, उसके बाद क्या डिफाइन करते हैं हम? कोई डेटा है उसका मीन निकालते हैं. देन variability, that was your standard deviation or variance, right? So if you want to get into some kind of data, so आप क्या निकालोगे? mean, and then you will see how scattered your data is, right? So the next thing we will see is standard deviation or variance, right beta? So variance क्यों important है? For example, suppose you are doing some experiment and you are getting results and you are repeating that experiment. आपका result हमेशा same नहीं आएगा, right? So what kind of data you want? When you will say that your experimental setup is reliable, कब बोलते हैं? When the data you obtain, you find out the mean and the variance. Variance should be very small. Okay, so if the variability in your data is very small, then you say that your data is reliable in this particular situation, right? So reliability theory is very important in all kind of manufacturing industry or anywhere, right? अगर आप कोई भी product बनाते हो, we want that we should have consistency, right? And consistency मतलब जो आपका final output है, that should not be much scattered. Okay, and how you will compute your, how you will quantify your scatteredness? By calculating variance or standard deviation. Is that okay beta? So what is variance? Tell me. Already हमने पढ़ा हुआ है.
What is variance? क्या थी variance? What is your deviation from mean? So variance is basically a measure of deviation from mean. ये सबको clear है बेटा? This thing is clear to everybody? So what was the formula for variance? X minus mean का square divided by इसका sum divided by n. This was your variance, sigma square, where mu is your mean. Correct बेटा? और mean क्या है हमारे केस में? We have, okay, let us just focus on this. Now suppose my data x is x1 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 x2 x2 x3 x3 x3. Suppose my data is this, मतलब उसकी वैल्यू 3 बार x1 है, 2 बार x2 है and 3 times it is x3. Then what will be this formula? That will be x1 minus mu square. How many times? 3 times. Plus x2 minus mu square. How many times? 2 times. Plus x3 minus mu square. How many times? 3 times. Divided by capital M is total number of data points, that is 8. Same thing we have done in mean also. Right? Is this clear, beta? This step is clear to everybody? Okay. So here this sum means over all the possible values of x. And I am assuming, suppose x takes following values, right? Then I can write this formula like this. Now tell me what is this? 3 by 8, 2 by 8 and 3 by 8. What is this? This is the probability. This 3 by 8 here is the probability that your x is x1. This 2 by 8 is the probability that x is x2. And this 3 by 8 is the probability that x is x3. Am I correct? Right? So basically what we are doing here is that xi minus mu square into probability that x is equal to xi over all different x's. This is what we are doing, beta. Right? Now what is this? If x is a random variable, then this is nothing but PDF. Right? This is how the PDF is defined. Point-wise probability into x minus mu square का sum over all the values of x. So this is how your variance is defined. Clear है बेटा सबको? Variance कैसे define होगा? x minus whatever is your mean उसका square कर लो into probability function और उसका sum. And ये किसकी definition है? This is expected value of x minus mu square. Right? यही है ना? एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी रैंडम वेरिएबल की कैसे निकालते हो? उसको पीडीएफ से मल्टीप्लाई करके सम करते हो. सो दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी हियर. राइट? सो नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज दिस? दिस इज डेविएशन फ्रॉम मीन. स्क्वायर इसलिए किया है कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों वेरिएबिलिटी कवर हो. राइट? सो दिस इज डेविएशन फ्रॉम मीन. ये उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है. ओके, यही हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी थी. सो व्हाट इज योर वेरिएंस? वेरिएंस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन. क्योंकि जो डेविएशन निकालोगे हर पॉइंट की, वो भी यू विल गेट अ रैंडम सेट. राइट? इफ कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, उसकी जो भी वैल्यूज है, मीन इज अ फिक्स नंबर, दिस इज अ फिक्स नंबर एंड दिस इज अ वेरिएबल थिंग. राइट? Fine, beta. So we say sigma square is summation x minus mu की जगह पे you can write expected value of x square into f of x, or this is integral x minus expected value of x का square f of x dx, depending on x is discrete or continuous. Is this in clear, beta? वही formula है, written in a different way, that is it. But you should be like, it should be clear to you that how we are transforming everything. Okay? It's nothing but relative frequencies everywhere.
let x be a random variable with PDF x is equal to 1, 2, 3 and the corresponding probabilities are 0.3, 0.4, 0.3. What is the variance of x? ऐसे लिखते हैं. Okay, variance is sigma square. नीचे x लिख दिया to denote that it is variance of capital X. बताइए बेटा कैसे करोगे? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मीन चाहिए, राइट? सो व्हाट विल बी माय एक्सपेक्टेड वैल्यू? 1 into 0.3. X can be 1 with a probability of 0.3 plus 2 into 0.4 plus 3 into 0.3. Clear beta? This is this formula x into f of x over x, right? This will be equal to 0.6. Clear beta? What will be variance now? That will be take the value, take the difference from mean, then make it square, and then what is the corresponding probability? Plus take the value 2, sorry ये 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है ना, take the value, subtract it from mean, make a square, and then multiply with the corresponding probability. Plus next value is 3, mean is 2, square it and multiply with the corresponding probability. So this is nothing but that formula, right? X minus mu square f of x. So answer is 0.6. देखो वही चीज है जो हम पहले करते थे. We used to have a table, right? Corresponding frequency दी होती थी, x into frequency से multiply करते थे, divided by total number of outcomes. ऐसे करते थे ना? The same thing, it is the same thing. Just that we are now talking in terms of random variable x and the corresponding. Clear है बेटा? कोई डाउट? Any doubt बेटा? चले आगे. एक्सप्रेशनलेस आपकी शक्लें हैं. मजा नहीं आ रहा पढ़ के? नींद आ रही है? Okay beta, so now we have a small result. Variance is expected value of x minus mu square, right? Where mu is your expected value of x, right? So we will show that this is actually equal to expected value of x square minus mu square. Okay, we'll prove that this variance can be computed like this. Simple the proof है. So sigma square is expected value of x minus mu square, which means summation x minus mu square into f of x. ये क्लियर है बेटा सबको? ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है दोबारा वेरिएंस का. अब मैं आपको एक इजी फॉर्मूला दे रही हूँ, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी इन द प्रॉब्लम्स. ओके, सो नाउ दिस इज a minus b whole square. So that will be a square plus b square minus 2ab. Can I do that beta? Now we will separate. So this is x square into f of x, x square into f of x plus mu square into f of x minus 2x mu into f of x. मैंने सिर्फ समेशन हर टर्म के साथ अटैच कर दिया. आई कैन डू दैट, राइट? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. किसी को डाउट यहाँ तक? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस बेटा? This is x square into the corresponding PDF. So this is expected value of x square, right? ऐसे तो निकालते हैं ना, gx into fx. अगर मेरे पास gx एक फंक्शन है और मुझे इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, दैट वाज g of x into fx का सम, राइट? तो यहाँ पे g of x into fx का सम, so this will be
inside you have x f of x. क्लियर है बेटा ये सबको? ये स्टेप किसी को डाउट? बिकॉज यू आर मेकिंग द समेशन ओवर x, तो म्यू बाहर आ जाएगा. म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट? क्लियर है? समेशन अगर ओवर आई कर रहे हो तो j अगर कुछ और लिखा तो वो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि उसके ऊपर सम नहीं कर रहे. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? व्हाट इज समेशन fx ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ x? पीडीएफ का सम क्या होता है? 1. इतना डाउट क्यों है आपको? बोलो ये 1 है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1. एंड व्हाट इज दिस? E of x. This is E of x. Very good. That is mu, right? Mu is a mean, right? So this is E of x square plus mu square minus 2 mu square. So that is E of x square minus mu square. Is that okay, beta? So variance can be computed as expected value of x square minus expected value of x uska square. So this is expected value of x square minus expected value of x uska square. Clear? Just another formula जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा. किसी को डाउट इसमें? So we have something called expectation of x raised to power n is called nth movement of x. ठीक है? For example, E of x is called the first moment. E of x square is called second moment, and so on. तो यहाँ पे this is so we can conclude that variance is equal to second moment minus first moment का square. Right? So this type of question is there in your lab sheet also. क्लियर बेटा? ये चीज क्लियर है सबको? कोई डाउट? Okay, using this formula find the variance. You have x is equal to 0, 1, 2, 3 and the corresponding PDF is 0.51, 0.38, then you have 0.10, 0.01. Okay, find sigma x square. करो. क्या क्या चाहिए हमें? एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा? वैल्यू इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज. 1 into 0.38 plus 2 into 0.10 plus 3 into 0.01. This is 0.61. Yes, beta? First, I'm sorry, beta, क्या कह रहे हैं? Moment. I'm sorry, मैं छोटा लिख रही हूँ, अभी बड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा ना. ये E of x is your first moment, E of x square is your second moment, expectation of x raised to power n is your nth moment. So यहाँ पे now we will compute the second moment, that will be 0 square into 0.51 plus 1 square into 0.38 plus 2 square into 0.10 plus 3 square into 0.01. सब्ट्रैक्ट करने से इजी है ना? नहीं तो हमें क्या करना पड़ रहा था? हमें मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे. इट्स इजियर
एंड व्हाट विल बी स्टैंडर्ड डिवीजन? अगर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना हो वो क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट? सो दैट विल बी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0.496. गॉट इट बेटा? किसी को डाउट? नींद आ रही है? Okay, do one problem. You have a random variable x. X is a continuous random variable. अभी करोगे आप लोग with PDF f of x is equal to 2 into x minus 1 for 1 less than x less than 2, 0 otherwise. Find variance of x. करो बेटा. X is a continuous random variable. With this PDF, you have to find the variance of x. क्या करें? Expected value of x square निकाल लें. What will be that? Expected value of x square क्या होगा बेटा? X square into f of x dx over all the possible values of x. ये क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूला बेटा पढ़ लो पिछला अपना, फिर आगे आपका ये अगर आपको नहीं क्लियर है ना चीजें, फिर ये ग्रो होता जाएगा, क्योंकि ये बार बार हम यूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में. सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट रैंडम वेरिएबल्स बाय नाउ. ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए. एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना डिफिकल्ट है. द फंक्शन जिसकी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग पीडीएफ, उसका या सम करोगे या इंटीग्रेट करोगे. ओके, ये कंटीन्यूअस है तो इंटीग्रेट करोगे. सो व्हाट इज दिस इंटीग्रल बेटा बताइए? सो दैट इज फ्रॉम 1 to 2 elsewhere the function is 0. So 1 to 2 x square into 2 times x minus 1 dx. इंटीग्रेट करना आता है ना सबको? So you see it is 5/3. कर लोगे इंटीग्रेट? पॉलिनोमियल फंक्शन है. And what is expected value of x? Sorry, this is 17/6. Okay, expected value of x will be x into f of x dx. So that is 1 to 2 x into 2 into x minus 1 dx. So that is your 5/3. So what will be your variance? That will be 17/6 minus 5/3 का square. So that will be 1/8. देखो वो फॉर्मूला से चीजें इजी होगी ना. Although you can directly use this formula also, आपकी मर्जी है. क्या फॉर्मूला यूज करूं? डायरेक्टली. अगर मुझे ये नहीं यूज करना तो डायरेक्टली कैसे करूं? x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर f of x dx. तो ये तो मुझे करनी पड़ेगी ये वाली कैलकुलेशन, है ना, क्योंकि e of x चाहिए ना. क्लियर? So this will be little difficult, but obviously you can use this also. But this is your answer. Standard deviation निकालना है तो इसका स्क्वायर. Clear बेटा? So we'll stop here. We'll continue from here tomorrow we have a class.